Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine, healthy, and safe at home. And our today's topic is composition of working population. So, this is the last topic of this chapter, which is population, distribution, density, and growth. So, let's start with this topic. The proportion of working population to total population. जो proportion working population का है और divided by total population उसको हम क्या कहते हैं work participation rate. So the proportion of working population to total population is called work participation rate. The population of India according to the economic status is divided into three groups. इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से इसको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है मेन वर्कर्स मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स सो अ पर्सन हु वर्क्स एटलीस्ट 183 days in a year it is called main worker. A person who works for less than 183 days in a year it is called marginal workers. And non workers are who does not work and depends upon working class. So according to 2011 census, it is observed that proportion of workers, both main and marginal, is only 39.8%, leaving a vast majority, about 60%, as non-workers. So this indicates an economic status in which there is a larger proportion of dependent population, further indicating possible existence of large number of employed or underemployed people. So the proportion of working population of the states and union territories show a moderate variation from about 39.6% in Goa and to about 49.9% in दमन एंड दीव. अगर हम देखते हैं वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेट है उनमें बहुत सारा वेरिएशन जो है देखने को मिलता है खासकर जो हमारे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर अगर हम देखें कि कहीं पे तो ये वेरिएशन काफ़ी मॉडरेट है और कहीं पे थोड़ा सा कम ज़्यादा देखने को मिलता है. अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा में इट इज़ अबाउट 39.6% प्रोपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का एंड in if we will see in the Daman and Diu, so there is 49.9%. So the states with larger percentage of workers are जहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में वर्कर्स काम करते हैं these states are हिमाचल प्रदेश सिक्किम छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कर्नाटका अरुणाचल प्रदेश नागालैंड Manipur and Meghalaya. And among the union territories, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have higher participation rate. So it is understood that in the context of a country like India, the work participation rate tends to be higher in the areas of lower levels of economic development since number of manual workers are needed to perform the subsistence or near subsistence economic activities. So this is about the composition of working population. Now come to the next topic, occupational categories. This is also the sub part of this topic. So the occupational composition की बात करते हैं हम of India's population, which means engagement of an individual in farming. तो ज़्यादातर हम लोग इसमें जो people individually engage रहते हैं farming में या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में या सर्विसेज में या एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी में दे आर इंक्लूड इन ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन में आते हैं ये. तो दिस शोज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी sectors. So according to 2011 census has divided the working population of India into four major categories: cultivators, agricultural laborers, household laborers and other workers according to the 2011 in percent. So if we talk about the working population, जो cultivators हैं हमारे या agriculture laborers हैं इनका अगर हम देखते हैं तो these are about 54.6% and whereas if we talk about the household industries, so it is about 3.8% of workers and other like household industries, trade, commerce, construction and repair and other services, तो यहाँ पे जो working population है which is 41.6%. So as far as the occupation of
country's male and female population is concerned. Male workers outnumber female workers in all the three sectors. तो यहाँ पे मेल है या फीमेल है, तीनों ही सेक्टर्स में इनको देखा जा सकता है. So the number of female workers is रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर. ज़्यादातर अगर हम देखें फीमेल वर्कर्स को, वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. दो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. लेकिन अभी काफ़ी टाइम से या काफ़ी सालों से अगर हम बात करें, रिसेंटली अगर हम बात करें, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है उसमें भी वीमेंस को काफ़ी आगे बढ़ते हुए या इम्प्रूवमेंट लाते हुए काम में पार्टिसिपेट करते हुए देखा जा रहा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द 2001 डेटा, इट इज़ अबाउट 58.2%. And if we talk about the 2011 data, it is about 54.6%. यानी कि अगर 2001 की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे 58.2% है, और 2011 की बात कर रहे हैं तो 54.6% है. यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है या प्रोपोर्शन जो है वर्कर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वो क्या हुआ है, कम हुआ है. So consequently the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase. It means जो secondary और tertiary sector है वहाँ पर लोगों का जो participation है वो क्या हुआ है, increase हुआ है. increase देखा गया है या बढ़ते हुए देखा गया है, लोग उसमें ज़्यादा involve हो रहे हैं. So this indicates a shift of dependence of workers from farm-based occupation to non-farm-based ones, indicating a sectoral shift in the economy of the country. तो यह इंडिकेट करता है कि जिस तरह से लोग जो कि फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन पे डिपेंड थे, वो अभी नॉन फार्म बेस्ड पर डिपेंड है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है वो अब थोड़ा कम कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, the spatial variation of work participation rate in different sectors in the country is very wide. अगर हम ये स्थानिक तौर पे देखते हैं, जो ये काम में जिस तरह का पार्टिसिपेशन रेट है वो अलग अलग सेक्टर्स में कंट्री में बहुत ज़्यादा अलग है या बहुत ज़्यादा वाइड है, कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा है. So for instance, the states like Himachal Pradesh and Nagaland have very large shares of cultivators. On the other hand, states like बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स. तो कहीं पे कल्टीवेटर्स ज़्यादा हैं या उनका शेयर ज़्यादा है, या फिर कहीं पे एग्रीकल्चरल लेबर्स ज़्यादा हैं. सो द हाईली अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी हैव वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बीइंग एंगेज इन अदर सर्विसेज. अगर हम जो हाई अर्बनाइज्ड, जो बहुत ज़्यादा शहर टाइप के जो एरिया हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तो यहाँ पे जो है जो दूसरी कामों में या जो सर्विसेज में या सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, उस तरह का जो प्रोपोर्शन है वर्क पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है. सो दिस इंडिकेट्स not only availability of limited farming land but also large scale urbanization and industrialization requiring more workers in non-farm sectors. So here this chapter is completed now, and after this we will start our new chapter which is migration. So this chapter we will start with our, I think जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब से स्टार्ट करेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन. सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय. एंड जस्ट डू वन थिंग ऑल्सो, read your chapter properly and do question answers of this chapter or in your notebook. Thank you.